અમદાવાદના ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલ ખાતે વિવેક શાહ પ્રોડક્શન દ્વારા પિતા પુત્રીના પ્રેમ અને તકરારનું એક સુંદર હિન્દી નાટક સ્ટેન્ડ અપ મિસ્ટર ખુરાનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ નાટકમાં મહેશ ઠાકોર, પ્રિયલ ગોર, તનુ વિદ્યાર્થી જેવા બોલિવૂડ ફિલ્મ જગતના ઉમદા કલાકારોએ નાટક ભજવ્યું હતું। અમદાવાદની કલાપ્રેમી જનતાએ નાટકને સુંદર પ્રતિસાદ આપ્યો હતો। આ કાર્યક્રમનું આયોજન હેમલ શાહ, અંકિતા સોની, વિવેક શાહ દ્વારા કરાયું હતું। આ તકે ભારત ટાઈમ્સ ન્યૂઝના ફાઉન્ડર શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ સહપરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આયોજકો દ્વારા ભારત ટાઈમ્સ ન્યૂઝના ફાઉન્ડર ઘનશ્યામભાઈ પટેલ તેમજ તમામ મહેમાનો અને કલાકારોનું મોમેન્ટો અને પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ખૂબ જ સુંદર પ્રતિસાદ, ખાસ કરીને અત્યાર સુધી જેટલા શોઝ કર્યા છે એમાંનો હું કહી શકીશ કે અમદાવાદનો આ ખૂબ જ ખાસ શો છે। ખાસ શો એટલા માટે છે કારણ કે અહીંયાનું પ્રેક્ષક ખાસ છે અને ખૂબ જ સુંદર પ્રતિસાદ એટલે માટે છે કારણ કે લોકો રિલેટ કરી શકે છે આ સ્ટોરીને। માત્ર કોમેડી નહીં, માત્ર એન્ટરટેનમેન્ટ નહીં, પણ જ્યારે વાત ઇમોશન્સની આવે છે, લાગણીઓની આવે છે, ત્યારે બાપ દીકરીની લાગણીઓ જે છે યુનિવર્સલ હોય છે। એટલે એમાં ભાષા નથી હોતી, એમાં કોઈ શહેર કે ગામ નથી હોતું, એ આખી વસ્તુ યુનિવર્સલ છે અને એ લોકો કનેક્ટ કરી રહ્યા છે, જે આજના ઓડિયન્સ પાસેથી ખાસ દેખાઈ રહ્યું હતું અને એ લોકોનો જે વન્સ મોર અને ક્લેપ્સ અને લાફ્ટર્સની ભરમારો આવી રહી હતી એનાથી ખ્યાલ આવી રહ્યો હતો કે દે આર ટ્રુલી કનેક્ટેડ ટુ ધ એન્ટાયર પ્લે। સો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઓફ સ્ટેન્ડ અપ મિસ્ટર ખુરાના। વાત જ્યારે આવી ભક્તિ પાસેથી, તો ભક્તિ રાઇટર છે આ પ્લેની અને એણે ઓલરેડી આ વસ્તુ વિચારીને રાખી હતી અને મારી સાથે શેર કરી, ત્યારે મને તરત જ કદાચ 10 સેકન્ડ પણ નહીં લાગ્યું એ વિચારતા કે યાર જ્યારે વાત બાપ દીકરીની આવે છે અને જ્યારે એ હિન્દી નાટકમાં એની રૂપાંતરિત કરવાની વાત આવે છે તો એમાં વિચારવા જેવું કાંઈ જ નથી, કારણ કે યુનિવર્સલ વાત છે, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ। અને સાથે સાથે જ્યારે સ્ટેન્ડઅપની વાત આવે છે કે આજનું યુથ જે કદાચ નાટક સાથે થોડું અળગું થયું છે, થિયેટરમાં કદાચ એજ ગ્રુપમાં એ 30, 35, 40 વર્ષની ઉપરના પ્રેક્ષકો જ જોવા મળે છે અને યંગસ્ટર્સ નથી જોવા મળતા, એ કદાચ સ્ટેન્ડઅપમાં વધારે જોવા મળે છે। તો આનાથી વધારે સરસ વસ્તુ એ ના હોઈ શકે કે સ્ટેન્ડઅપનું ફ્યુઝન એક નાટકની અંદર આવે તો એ પ્રેક્ષક પણ અમને એ પ્રતિસાદ મળી શકે, એ પ્રેક્ષક પણ નાटक ने माणी सके અને थिएटर में ये यंगस्टर्स पाछा आवी सके। हम आर्टिस्ट जो होते हैं, हम टीवी और फिल्म करते समय वी बिकम वेरी स्टेल एज एक्टर्स, मतलब वो ही काम करो, कट हो, ये हो, वो है। तो टू कम ऑन स्टेज इज़ लाइक एन एक्सरसाइज कि मतलब एक बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले इतनी लाइनें याद करना, पंचेस याद करना, टाइमिंग याद करना, तो ये एक चैलेंज होता है आर्टिस्ट के लिए कि मैं कर पाता हूँ या नहीं, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म्स एंड टेलीविजन हैव अ बेटर कॉम्पनसेशन। थिएटर में इट ऑल डिपेंड्स ऑन टिकट सेल्स एंड इट्स वेरी लिमिटेड, तो वी डोंट डू इट फॉर द मनी, वी डू इट फॉर द लव ऑफ द एक्टिंग, यू नो, वी लव बीइंग एन आर्टिस्ट, तो इसलिए हम स्टेज पे यू नो वी लाइक टू परफॉर्म। तो सबसे पहले अगर उन लोग थिएटर में सफल हो सकते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज एज एन एक्टर यू शुड बी एबल टू बी कंफर्टेबल ऑन स्टेज। एक बार आप स्टेज कर पाओगे तो फिल्म्स एंड टीवी बिकम्स ईजियर, बिकॉज आपके भावनाएं, ऑल योर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग कम्स वेरी नेचुरली ऑन स्टेज। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोशिश करना चाहिए टू शाइन ऑन स्टेज, एंड देन ऑफ कोर्स आप फिल्में कर सकते हो, सीरियल्स कर सकते हो, बिकॉज यू कैन नो इफ़ यू आर एन एक्टर ओनली इफ़ यू कैन मैनेज टू डू स्टेज। अब स्टेज अगर आप स्टेज कर लोगे तो समझ जाते हैं कि आप मतलब आर्टिस्ट हो, यू नो, वैसा मेरा मानना है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं ऐसा मानता हूँ। वेल, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक अहमदाबाद इज़ अ वेरी फ्रेंडली सिटी, लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है इनको नाटक देखने का बहुत ही एक सलीका है और वो इन्जॉय करते हैं नाटक देखना, तो आधी जीत तो वहीं हो जाती है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो स्टैंड अप मिस्टर खुराना है वो बहुत ही अच्छा स्क्रिप्टेड है एंड एट द सेम टाइम के आई मीन आई कैन से, मतलब मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन बाकी एक्टर्स बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरह डायरेक्ट किया गया है। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ प्ले जहाँ पे आपको ना ही आप हंसेंगे बट यू विल गेट इमोशनली टच्ड, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन शो है एंड आई लव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है और आई थिंक ये सिर्फ यहाँ अहमदाबाद में ही मिल सकता है। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू मिस्टर विवेक शाह, हेमल शाह जी एंड ऋषिकेश एंड सर अंकिता सोलंकी जी। सॉरी, मेरे नाम याद, मेरे को डायलॉग आसान से याद होते हैं, नाम याद नहीं होते। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दीज ऑर्गेनाइजर्स टू हैव अस ओवर हियर एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। या सो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन अगेन है कि आप अगर आप अगर एक्टिंग के क्षेत्र में देखें तो दो टाइप के एक्टर्स होते हैं, एक एक्टर होता है और एक स्टार होता है।
तो अगर आपको एक्टर बनना है तो थिएटर मुझे लगता है काफ़ी मदद करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही एक ज़रिया है, बट थिएटर इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि आप अपने सारे जो अभिनय के स्किल्स हैं उसको आप होन कीजिए, आप उसको परफेक्ट कीजिए, यू नो। एंड ये सिर्फ डायलॉग याद करने की बात नहीं है, इट्स गॉट मोर टू डू विद द फैक्ट कि आपको कैरेक्टर मिलता है, आप पूरा स्टोरी ग्राफ उसको डेवलप करते हैं। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली थिएटर ज्वाइन करिए। अगर आप डायरेक्ट स्टार बनना चाहते हैं तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे वो जर्नी के बारे में पता नहीं है। अरे इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। इवन हम इसको रिहर्स करते हुए, परफॉर्म करते हुए बहुत खुशी होती है, बिकॉज इसमें जो लव दिखाया है ना, तो फादर और डॉटर का लव तो हर ही घर में है, हर इंसान उससे रिलेट कर सकता है। और जब हम ये करते हैं, इसमें हंसी के मोमेंट्स हैं जो हम फील करते हैं, कभी गुस्सा आ रहा है और फिर रोते भी हैं, तो इट्स लाइक अ लाइफ जर्नी। तो बड़ा मज़ा आता है हमें ये करते हुए, और हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, और ऑडियंस भी वही करती है। थिएटर की जो जर्नी है, मेरे हिसाब से कोई जर्नी ऐसी नहीं हो सकती, चाहे वो टीवी हो, कैमरा, कोई भी परफॉर्मेंस थिएटर जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइक यू सेड, स्टेज में देयर आर नो रीटेक्स। आपको बहुत ही प्रेजेंट रहना होता है उस मोमेंट में। कोई भी गलती हो आपसे, किसी और एक्टर से, आपको उसको लेके आगे बढ़ते रहना है। सो जो लाइफ लेसन है एक तरीके से, जो थिएटर आपको देता है। सो थिएटर इज़ माई लव, एंड आई से कि जिसको एक्टर नहीं भी बना उसे थिएटर करना चाहिए, और बच्चों को खासकर करना चाहिए, अडल्ट्स को करना चाहिए, बिकॉज इससे आप सीखते हो कैसे एक टीम में एग्जिस्ट करो, और चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू, द शो मस्ट गो ऑन। तो मुझे ये, एक तो फर्स्टली स्क्रिप्ट ही ब्यूटीफुल था फादर डॉटर का। मेरे फादर भी हर शो मेरा देखते हैं, वो खुद ही बहुत ही एंथुजियास्टिक ऑडियंस भी हैं, प्लस ही सिंग्स आउट ऑफ पैशन। तो वो सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, और खासकर कविता का कैरेक्टर मुझे ब्यूटीफुल लगा, क्योंकि कविता सिग्निफाइज अनकंडीशनल लव। कनक मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मैं शॉक्ड हूँ सुन के कि जिनके साथ मैं हूँ उनकी बेटी भी है, बट फिर वी ऑल फ्लो विथ लव। सो आई लव कविता's character for that. સૌથી પહેલાં તો અમદાવાદની ગુજરાતની ઓડિયન્સને નમસ્કાર. મારું નામ છે હેમલ મિલન શાહ, અને હું પોતે એક પ્રોડ્યુસર બી છું, ચિરાગ ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ વિકાસ સંઘની ચેરપર્સન બી છું. અને મને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે અમે અમદાવાદની પબ્લિકને, ગુજરાતી પબ્લિકને ડ્રામા દ્વારા, સ્ટેન્ડઅપ મિસ્ટર ખુરાના હિન્દી ડ્રામા દ્વારા એક સારો એવો મેસેજ પહોંચાડ્યો છે. બાપ અને દીકરીનો જે સંબંધ છે એ કઈ રીતનો હોવો જોઈએ છે, બાપ કઈ પરિસ્થિતિમાં છોકરાઓને મૂકીને જાય છે, અને દીકરી કઈ પરિસ્થિતિમાં બાપને મેનેજ કરી રહી છે. આ એનો એક બહુ જ મહત્ત્વનો મેસેજ હું કહી શકું છું. સ્ટેન્ડઅપ મિસ્ટર ખુરાનાના ડ્રામા તરીકે અમે પીરસ્યો છે ઓડિયન્સને, જે ઓડિયન્સને ખૂબ પસંદ આવ્યો છે. આજની અમારી જે ઓડિયન્સ છે ખૂબ જ એન્જોય કરીને ગઈ છે, તેના માટે હું ઓડિયન્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માગું છું. અને અમારા નાટકના પ્રોડ્યુસર છે સચિન પારેખ સર, તેમનો બી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માગું છું, જેમણે અહીંયા અમારી સાથે રહીને ડ્રામા પ્લે કરવાની પરમિશન આપી, અને વેલકમ કરું છું એમનું. થેન્ક યુ.